नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब हमारे साथ आईवीबीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई जुड़ रहे हैं। सुधाकर जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। और सबसे पहले जो ओवरनाइट या पिछले 2-3 दिन में खबर निकल के आई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन को खाने के तेलों में 10% की कटौती करनी चाहिए खरीदारी में या यूज में, आप उस लाइन को कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स उन्होंने फिटनेस के तौर पर कहा है, लेकिन और किसी कमोडिटी का नाम नहीं लिया। खाने के तेलों को कम कंजम्पशन करने की बात उन्होंने यहां पर की है। Yes, Manisha ji. Yeah, I think it's a good call because India is dependent on imports for about 60%. आपको पता ही है कि 26 million tons of consumption में 16 million tons तो imports से हम लोग meet out करना पड़ेगा. And especially in this volatile and complex markets, there are a lot of strategic shifts into the global markets. In that context, India is the largest buyer of edible oils in the world. So in that with that significance, I think there is this call by Honorable Prime Minister that he should reduce 10%. 10% would mean about 1.6 million tons. Or, okay, let's put on the total consumption 2.5 million tons of oil. Okay. If everybody adapts that. From a health point of view, that's the call. And I think there is also a lineup of ambassadors have been selected to promote this cause of less oil. जैसे आपने कहा हेल्थ के तरीके से और जिस तरह की हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, दोनों ही तरीके से परहैप्स इसको देखा जाना चाहिए। जो दूसरी बात है जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जा रही है, आपको लगता है वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ अलाइन होती है? और कैसे देखते हैं आप उसे? बिकॉज लास्ट टाइम जब ड्यूटी यहाँ पर बढ़ाई गई थी तो 20% का जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज़्यादा था और अब फिर इसकी बातचीत होने लगी है। But okay, I'm just back from Malaysia, and I delivered a presentation also on the strategic shifts and how to navigate the Indian markets. Indian market is very, very important for the global markets, and thereby India's policies are also very, very important for the world markets. It's a two-way influence. So in that context, I don't want to speculate on the duty rumors which keep happening every day. Rather, IVPA is always proposing a very strategic and stable dynamic duty policy, which जिसमें international global prices, MSP or MRP, I would say consumer prices को ध्यान में रखते हुए you can keep adjusting the duty structure and make it a little bit more transparent than today. Instead of knee-jerk reaction. As far as the last duty correction, I think उसका objective fulfill नहीं हुआ है because of the de-oiled cake issue. The issue is not very simple. उसका हो सकता है कि de-oiled cake में DDGS में थोड़ा GST बढ़ा दे या मील का एक्सपोर्ट्स में इंसेंटिव दिया जाए. वो अपना रीजनल इश्यूज है. एंड एज यू आर वेल अवेयर कि ड्यूटी इंक्रीज होने के कारण सैफ्टा कंट्रीज का जीरो ड्यूटी भी इंपोर्ट्स ट्रिगर ऑफ हो गया है. एंड ऑल्सो पाम के अंदर एक तो पाम का डिमांड एट दिस प्राइसेस हैज फॉलन. I estimate in import demand for palm to be only 7.8 million tons as against 9.22 million tons. There is a 1.5 million tons reduction, which is an opportunity for domestic oils and for soybean oil and sun oil. They will take advantage of this fact because of the tightness in palm. But in that context, I think we need to be very dynamic. जैसे आप गोल्ड के बारे में भी बात कर रहे थे, I think we are very, very globally linked situation here, and I was trying to explain about the circularity and the complexity of the markets in my presentation on the sidelines of POC. Okay. It is very, very true that today's global world is strategically changing a lot. Palm has become the costliest oil, and then you have the biodiesel on the other side, which is 25% of the global production is going into biodiesel. In a way, it is 40% of the tradable surplus is going into biodiesel. So I had given out a call for balance as a main key factor. I think somewhere this biodiesel into the food, the diversion of food into fuel should have some kind of a quota system. So my topic, or in this context, even including your duty question, is about balancing. I think biodiesel quota should be there globally. Okay.
एंड सैफ्टा इंपोर्ट जीरो ड्यूटी इंपोर्ट जो इंडियन इंडस्ट्री को और इंडियन फार्म सेक्टर को अफेक्ट करेगा, मेरे ख्याल से उसमें भी थोड़ा कोटास होना चाहिए. एंड ऑल्सो रिफाइंड ऑयल का जो इन्फ्लक्स आ रहा है बहुत पाम का, वन थिंग इज दैट द पाम मार्केट हैज बिकम वेरी वेरी लेस. यू सॉ द January imports of palm oil, they were about 50% of the normal palm imports. So we have to tread very carefully. There is a tectonic shift in the supply chain due to globally linked issues. So I would say that the duty policy should balance between farmers and if need be, from time to time use the dynamic duty and put quotas on SAFTA, put quotas on refined oils, and the global biodiesel should also regulate itself. Otherwise, you don't have too much abundant oil. आज के दिन में entire global production increase this year will be about 206.5 million tons, whereas the demand is also about 205 million tons. So the net surplus globally is only about 1.5 million tons, which can be taken away by biodiesel any point in time. Correct. Unless we regulate that market. So absolutely, these are the complex structure of the global markets in the Indian context. हमने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स ऐसी टाइम टू टाइम इंडोनेशिया से आते हुए भी देखी हैं कि वो ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट करना ही नहीं चाहते. ऐसी एक रिपोर्ट भी थी कि ज़्यादातर वो डोमेस्टिक मार्केट्स को देखना चाहते हैं और फिर बायोफ्यूल्स को देखना चाहते हैं. अगर मेजर प्रोड्यूसर्स की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आने लगें तो आगे जाकर फिर किस तरह की स्थिति आप बनता हुआ देखते हैं, वन. और दूसरा, जो आपने यहाँ पर पाम ऑयल की बात करी, जहाँ पर हमने प्रीमियम पे प्राइसेस को कारोबार होता हुआ देखा है, क्या वो प्रीमियम आप हटता हुआ देखते हैं, क्या प्राइसेस और बैलेंस में आता हुआ देखते हैं? हाँ जी, ये स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है अगेन, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है. वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में पूरा टॉक इंडिया के ऊपर ही है कि इंडिया कितना पाम ऑयल लेगा एट दिस प्राइसेस, व्हाट इज द कोर डिमांड ऑफ पाम, व्हाट इज द इंक्रीमेंटल सप्लाई. अगर हम जवाब देंगे, सो ग्लोबल सोयाबीन ऑयल इन दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 3.5 मिलियन टन्स. दिस इज आफ्टर कटिंग डाउन अर्जेंटीना एंड इंक्रीज इन ब्राजील एंड यूएस. सो 3.5 मिलियन टन्स incremental supply. Palm oil will have about 2 to 2.2 million tons, mainly from Indonesia, increase at about 50 million tons Indonesian crop. But we should see only the incremental changes, 2.2 million tons, of which about 600 or 700,000 tons will go into biodiesel. Biofuel. So net, we see Indonesian stocks going up by about 2 million tons to 2.5 million tons. Because the food demand is falling as an offshoot of biodiesel demand. So I feel somewhere biodiesel quotas will regulate these markets. And I see that down the line, palm after April, May, palm would require the food demand, especially of India. And both the new crop of soybean oil and palm oil will compete mainly into the Indian markets for market share. So I am in the camp that palm will have to regulate and go down versus other rival oils, because otherwise its demand is being taken away by soft oils. This is the global balance issue. And as far as many changes are happening, especially from US, biodiesel by way of trade tariffs, it is changing. These things are also very important. I also heard that if US is putting up tariffs in canola oil, then canola also needs Indian market. I'm giving this as an example that all the global market surpluses or the palm market, the main key point is they want destination India. In that competition, I see palm oil going down in terms of prices, because the supply, the biodiesel demand being paused because of B40 is lower than the supply increase that we are going to see in the second half of this year. इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर.